Okay, चलो. Hello, good evening to all, and today we are going to discuss about two important chapters. First one is your microencapsulation, and second one is your suppositories. So both chapters are very important as far as your GPAT Niper is concerned. So they used to ask at least one or two questions from each chapter. So it's my request to you, please listen carefully today's lecture. इसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है. Micro encapsulation and suppositories, it is our today's topic of discussion. So first, micro encapsulation. First of all, micro encapsulation. So first of all, you should know what do you mean by micro encapsulation. So as the name indicate, micro means a thin or in a size of micron, and encapsulation means to encapsulate means to envelope. Okay, to envelope or to cover. So microencapsulation is nothing but the a formation of a thin layer of polymer in a micron on a particular particles. Now that particle may be either solid or liquid or a droplet, or it may be a dispersion. So micro microencapsulation means what? A application. Microencapsulation is application of a relatively a thin coating. जो is a application of a relatively thin coating to a particles of solid, droplets of liquid or dispersion. Okay, so whatever particle is being coated, whatever particle is being uh, capsulated, whatever particle is being enveloped, that is nothing but the that is known as a core material. Okay, so that core material is nothing but it may be either solid or liquid droplet, or it may be either dispersion. Okay, so that you have to envelop that core material using a polymer film in, into a thin layer of your polymer. Okay, so that is nothing but the encapsulation. You have to form a capsule, a thin layer of envelope around your core material. So that is nothing but the microencapsulation. Application of relatively relatively thin layer coating to a particle of solid, droplet of liquid, and dispersion. Whatever particle is being coated is known as a core material. Okay, which may range from several tenth of micron. So that core particle may be in a range of 10 maybe in a range of micron, 1 micron up to 5000 माइक्रोन इन साइज. कि ये आपका जो 1/10 है माइक्रोन का मतलब मिली माइक्रोमीटर जिसको बोलते हैं, वहां से लेके 5000 माइक्रोन तक आपका कोर जो है उसको आप कैप्सुलेट कर सकते हो. उससे ज्यादा अगर कोर होगा, कोर का साइज, so if your particle size of your core is more than 5000 micron, then it comes under the macro encapsulation, not micro encapsulation. So micro encapsulation means encapsulation of core material in a micron size. Okay, that is a microencapsulation. Now why this is important to our pharmaceuticals, and why we are studying this microencapsulation. So first of all, microencapsulation provides a different way. It provides a tool for converting liquid into solid, or altering the colloidal and surface properties of core, then for providing a protection of core from external environment. So if you build a thin film, if you encapsulate the core material, then the core material will not come in direct contact with your environment. So it will, the environmental properties like humidity, gas, etc etc, temperature will not affect to that much of extent to the core material. जो भी core material है, अगर उस पे उसके ऊपर एक thin film आपने बना दी, अगर उसका माइक्रो एनकैप्सुलेशन कर दिया, तो उसमें क्यों करना है? क्योंकि अगर इसमें बहुत सारा एडवांटेज है, डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेज होता है उसका. सो माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड्स द वे to convert liquid into solid, then altering the colloidal and surface properties, then
providing the protection from environment and controlling the release characteristics or bioavailability of core material. तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास आपको विटामिन ई है आपके पास. यू नो दैट विटामिन ई इज अ लिपिड सोल्यूबल विटामिन एंड इट ऑकर्स इन द नेचर एज अ लिपिड. इट इज अ लिक्विड. ओके, कि लिक्विड लिक्विड जो होता है विटामिन ई, अगर उसका टैबलेट बनाना है आपको तो कैसे बना सकते हो आप? देखा है कभी विटामिन ई का टैबलेट? पहले तो नहीं था, लेकिन अभी आजकल है. That is possible because of microencapsulation. You are converting the liquid particle, liquid droplet into solid particle. Okay, by microencapsulation, and now that solid particle is able to flow from hopper to the dye cavity, and you can compress that tablet. That's why microencapsulation is very important. Okay, then also you can the characteristic of that thin layer, thin coating will also vary. अगर वहाँ पे कंट्रोल रिलीज आपने पीएच सेंसिटिव पॉलीमर का कोटिंग किया है तो मतलब वो कंट्रोल रिलीज भी हो सकता है, सस्टेन रिलीज भी हो सकता है ना, डिलेड रिलीज भी हो सकता है. So there are the different microencapsulation application. So next point is microencapsulation methods. So what are the important methods? See, we are not going to discuss all the detail of this chapter. I'm just taking a superficial and whatever is important. Okay. So I'm not going to discuss the details of air suspension method. I'm not going to details discussion of polymerization technique. So I'm just taking whatever is important. So these are the methods for microencapsulation. Okay, air suspension method. Remember this is the important part. Air suspension method, coaguation phase separation method, then spray drying and congealing, then polymerization, then solvent evaporation is also one of the. Then pan coating is there. Okay, there are 5 6 method of microencapsulation. So but mostly air suspension method, coaguation phase separation, and then pan coating is mostly used. So this polymerization technique is literally a new technique of microencapsulation. We will discuss in upcoming slide also. Okay. Are you able to see the screen properly? Hello? Hello? Okay. Applications of microencapsulation. Applications of microencapsulation includes to form a sustained release or prolonged release medication. Then again, microencapsulation also help to mask the taste of tablet. Then it will mask the taste of tablet, powder, suspension, etc. etc. Again, if you are formulating a single tablet and in that tablet you have multiple ingredients or multiple APIs, and those APIs are incompatible amongst themselves. So in that case, you just try to and microencapsulate the each API separately and then finally compress the tablets. There will be no incompatibility. So that's how microencapsulation will help you to form a certain release product, prolonged release product. Then test masking for tablet, powder, suspension, single tablet with two or multiple incompatible material. Then you can use this microencapsulation technique to to sustain your product in the market. Okay, the new formulation technique for so it is microencapsulation is also a new formulation technique for creams, ointments, surgical dressing, plaster, suppository, and injectable. So it is not much important part, but still you should know it. What is mean by microencapsulation? What are the different method for microencapsulation? And what is the application, what is the use of this? Okay, so now, so important application along with this, important application like stabilization of core material. Okay, then control of release of that core material, bioavailability of that core material, and separation of chemically reactive ingredient from each other or from one another. Okay, and then powder mixer also. So we have already discussed in this point in this paragraph, but still okay. So stabilization means what? See, आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गया. So these are nothing but the lipid soluble vitamin and they occurs as a liquid in nature. Okay, now you know that whenever there is a whenever there is involvement of solvents or if there is a liquid, so it may get deteriorate. आपको मालूम है लिपिड है,
लिपिड है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना, रेंसिड हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा. सो टू प्रिवेंट दैट ऑक्सीडेशन एंड डिटोरियोरेशन ऑफ your lipid soluble vitamins, now they are formulated as a micro capsule and then they are formulated as a tablet. So it gives you another way to convert a liquid into solid. That's how application of microencapsulation. Now example, for example, microencapsulation of vitamin E and A oil to the free flowing powder. Now there is one tablet known as Evian LC. It is manufactured by Merck Limited, yes. And Evian LC, so it is a tablet and it consists of your vitamin E. अभी देखो विटामिन ई तो आपका लिक्विड में आता है, तो लिक्विड का आप टैबलेट कैसे बना सकते हो, नहीं बना सकते. तो उसको क्या करना है कि पहले उन्होंने वो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया, कैसे, बाय बाय माइक्रो एनकैप्सुलेशन, ठीक है. और उसके बाद में उसका टैबलेट बना दिया. तो वो टैबलेट आजकल मार्केट में है, इवियन एलसी. इवियन एलसी इवियन एलसी टैबलेट है, और इवियन नाम का कैप्सूल भी आता है, इवियन 200, इवियन 400 का कैप्सूल दैट कंसिस्ट ऑफ विटामिन ई. लेडीज जो लोग हैं, जो गर्ल्स होते हैं मोस्टली यूज करते हैं उसको फेस अपना जो आपका हेयर्स है, हेयर्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, बाल के लिए, बाल अच्छे दिखने के लिए. So there are few core material which has been microencapsulated to improve their properties. Okay, so for example, core material and their characteristic property. Purpose of encapsulation, what is used, purpose of encapsulation and final product form or dosage form. For example, acetaminophen, paracetamol, so it has a lower water solubility, so and also it is a very bitter taste. So microencapsulation of this acetaminophen will resolve the will will mask the taste. Okay, so purpose of microencapsulation of acetaminophen is taste masking and it is formulated in the form of tablet. Then again activated charcoal. आपको मालूम है एक्टिवेटेड चारकोल कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे पॉइजनिंग हो गया आपको तो एक्टिवेटेड चारकोल दिया आपको, तो एक्टिवेटेड चारकोल will absorb that poison in your stomach and that poison will not be will not reach to systemic circulation. That's all. So activated charcoal is also sometimes microencapsulated to get a selective adsorption and it is available in the dry powder. Then aspirin acetyl salicylic acid, you know, it has a lower solubility again and it is incompatible with many drugs, aspirin. So that's why it is microencapsulated to get a for the purpose of taste masking, to get a sustained release formulation to prevent the incompatibility. So it is formulated in the form of tablet. Again, islets of Langerhans. islets of Langerhans with viable cells. जो आपका पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस होते हैं, सो दे यूज टू सिक्रेट द हार्मोन्स, सो ग्लूकागॉन एंड योर इंसुलिन. सो मोस्टली बीटा सेल्स विल सिक्रेट योर इंसुलिन और अल्फा सेल विल सिक्रेट ग्लूकागॉन, रिमेंबर, ठीक है. तो so to these viable cells are used to control the diabetic condition. Okay, so these viable cells are also microencapsulated to get a sustained action and normalization of diabetic condition. So these are used in the form of injection. Then isosorbide dinitrate, you might have heard this isosorbide dinitrate. It is used in the angina pectoris, so it is a vasodilator drug. It belongs to nitrates. Okay, nitrates, ग्लिसरील नाइट्रेट जो होता है उसके बाद में आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट, इट इज अ लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट, याद रखो. सो इट इज अ वाटर soluble sodium and it is a micro encapsulated to get a sustained release, because as it is a water soluble it will have a short duration of action. That's why to get a sustained release action is micro encapsulated, so in the form of capsule. Then next one is the progesterone. Progesterone, it is a steroidal drug. Okay, so it has a lipid solubility but it is slightly soluble in water. So to get again sustained release of action, and it has a different varied product, like it is also available in the form of capsule, also in the form of injection. Then next one is vitamin A. So it is also vitamin A palmitate is also microencapsulated to prevent the oxidation. Okay, to stabilize the product. So if microencapsulated vitamin A
or normal vitamin A formulation. So normal vitamin A formulation will degrade quickly as compared to microencapsulated vitamin A palmitate. So to stabilize the formulation and to prevent the oxidation, so this is converted into dry powder. Vitamin A क्या है? It is a fat lipid soluble vitamin. It occurs in the form of lipid liquid. ठीक है, लिक्विड होता है विटामिन ए, है ना, बीटा कैरोटीन. तो उसका ड्राई पाउडर बनाएंगे ऐसा. सो दीज आर द सम कोर मटेरियल्स which are encapsulated in our pharmaceuticals to get a different purpose for the different purpose. Now we will see the methods. Okay, so now this chart is very important for you as far as GPAT Niper is concerned. So here I have summarized different methods of microencapsulation, the core material used for that method, and the particle size, approximate particle size of that core. Okay, so on this chart they used to ask the question, so you have to be clear about this chart. Okay, so microencapsulation process, first one is the air suspension. So air suspension जो मेथड है उसमें आपको किसको एनकैप्सुलेट कर सकते हो, सॉलिड को. ठीक है, और आप किस किस सॉलिड पार्टिकल साइज रेंज को कर सकते हो, 35 to 5000 micron. Okay, so in using air suspension method you can encapsulate the solids and it should be within the range of 35 to 5000 micron. Okay, so sometimes it you also can code uh, if the particle size is more than 5000 micron, you can code by using air suspension method, and that's why this method is nothing but the, it is also known as microencapsulation or and macroencapsulation. It is a method for both microencapsulation as well as macroencapsulation. Micro encapsulation means micron size, macro means more than 5000. Okay, so it is a method for microencapsulation as well as macroencapsulation, remember. Now second is a coagulation phase separation method. Okay, in this you can encapsulate solid as well as liquid, so you can encapsulate in a range of 2 to 5000 again micron. Okay, then next one is a multi orifice centrifugal method. So in this method also you can coat solid as well as liquid core material, then you will get it should be in a range of particle size of 1 to 5000 micron. Then next one is a coating. Actually this coating means pan coating. यहाँ पे pan लिखना भूल गया या फिर delete हो गया होगा. So it is a pan coating. So in using pan coating you can coat the solid. जैसे आपका tablet coating process होता है उसमें एक coating pan होता है, ठीक है, जो tablet coating के लिए use करते हैं. As it is not your routine lectures, ये GPAT का lecture होने की वजह से मैंने वो pan कैसे होता है, कितने कितने टाइप के pan होते हैं, कोटिंग प्रोसेस कितना होता है, पूर्ण डिटेल में नहीं बोला है. ठीक है, सो इन केस ऑफ पैन कोटिंग अगेन you are coating the solid core, or okay, you are encapsulating the solid core, so it should be in the range of 600 to 5000 micron. Then solvent evaporation is another method. So solid and liquid both core can be encapsulated, so it should be within the range of 5 to 5000 micron. Then spray drying and spray congealing. So in this solid and liquid both are microencapsulated, so particle size उसका कितना होना चाहिए, approximate 600 micron. Okay, so coating material. Okay, so we have seen the core material. core देखा आपने कि किसको आपको एनकैप्सुलेट करना है, किसको माइक्रो एनकैप्सुलेशन करना है. तो मतलब आपका ड्रग हो सकता है या फिर फार्मास्यूटिकल एड हो सकता है या फिर दूसरा कोई चीज हो सकता है, जैसे आपको स्टेबिलिटी एनहांस करना है उसका, या फिर उसका सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन बनाना है, या फिर कंट्रोल रिलीज बनाना है, या फिर उसका कुछ इनकॉम्पेटिबिलिटी है तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन करना है. ठीक है, करना है, कोर डिसाइड हो गया आपका. ठीक है, किसको माइक्रो एनकैप्सुलेट करना है वो भी डिसाइड हो गया, कोर. ठीक है, बाद में क्या होता है कि किससे करना है माइक्रो एनकैप्सुलेशन. सो कोटिंग मटेरियल कौन सा यूज करेंगे. सो डिफरेंट कोटिंग मटेरियल्स आर यूज्ड टू माइक्रो एनकैप्सुलेट द different core material. So they are classified into different classes, mostly four classes. So water soluble resins or water soluble polymers like gelatin, gum arabica, starch, polyvinyl pyrrolidone, carboxymethyl cellulose, hydroxymethyl cellulose, methyl cellulose, arabinogalactan, polyvinyl alcohol, polyacrylic acid. So I'm just reading the names.
there is no need to go in the detail, just remember water soluble resin कौन से होते हैं, आपको easily समझ में आएगा वो water soluble कौन है, water soluble कौन नहीं है. The next one is a water insoluble resin like ethyl cellulose, polyethylene, polymethyl acrylate, then polyamide. This polyamide is also known as nylon. Okay, this polyamide is also known as nylon. And then polyethylene, ethyl polyethylene, ethylene vinyl acetate. Okay, polyethylene means ethyl vinyl, ethylene vinyl acetate. Then cellulose, nitrates and silicones. So these are the water insoluble resin which are used to coat the your core material. These are the water soluble resins. ये resins बोलो या polymer बोलो, ठीक है, ये polymer है जो आपको कोट कर सके, इसका कोट करना है किसके ऊपर, कोर मटेरियल के ऊपर, ठीक है. नेक्स्ट वन इज third class is your waxes and lipids. So paraffin wax, carnauba wax, spermaceti, beeswax, stearic acid and stearyl alcohol. So these also can be used to coat the core material. So now this belongs to waxes and lipid class. Next one is the enteric coating resin. So this is the fourth. So shellac, then cellulose acetate phthalate, then zaine. So these are the enteric coating polymers which can be used to microencapsulate the core material. Okay, now we'll see the methods in the very short, not in the details. फर्स्ट वन इज एयर सस्पेंशन मेथड. ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी नाइपर में भी आ चुका है और जीपैट में भी कभी भी पूछ लेते हैं, ठीक है. तो एयर सस्पेंशन मेथड, फर्स्ट वन इज एयर सस्पेंशन मेथड. नाउ इन this method was invented, this method was introduced, it was invented by Professor Dale E. Brewster. Try to concentrate or try to focus on cursor position of mouse. So air suspension method is related with Dale E. Brewster. It was invented by Dale E. Brewster. Okay, it is also known as Brewster technique. यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, it is also known as a Brewster technique. Okay, and in this method only solid core can be microencapsulated. ठीक है, microencapsulation समझ में आ रहा है आपको? Are you getting or not? Just let me know. Are you getting or not? Hello. No, if you are not getting then you can ask, but compulsion नहीं कि मैंने पूछा तो हाँ सर बोल लेंगे, ठीक है. सो एयर सस्पेंशन मेथड में क्या है कि इट वाज इन्वेंटेड बाय, ये किसने बोला था, डेल ई ब्रस्टर. सो इट इज आल्सो नोन एज ब्रस्टर टेक्निक एंड only solid core can be encapsulated in this technique. It is used for both microencapsulation as well as macroencapsulation. याद रखो. Now in this air suspension method there are three types of flow: tangential flow, then top flow and bottom flow. ये कैसे होता है मैं बोलता हूँ जब डायग्राम के लिए आपको दिखाऊंगा, ठीक है. Now next method is a coadsorption phase separation method. So it is the method was given by National Cash Register Corporation NCR. याद रखो. So, coadsorption phase separation method. तो इसमें क्या होता है, now what happens in the coadsorption phase separation method? So you have to microencapsulate the core material. Okay, so now this method involves three steps. Coadsorption phase separation method involves three steps. So first step is nothing but the formation of three immiscible chemical phases. कि मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्या करना है, कोटिंग करना है किसका, आपका जो कोर मटेरियल है, कोर मटेरियल लिया आपने और आपने पॉलीमर लिया जिसके साथ कोटिंग करना है. अभी पॉलीमर डायरेक्टली तो नहीं ले सकते, उसको डिजोल्व करना पड़ेगा ना आपको कोई तो व्हीकल में या फिर सॉल्वेंट में. ओके, सो वो सॉल्वेंट में आपने डिजोल्व किया. नाउ इन दिस phase separation coagulation method what happens? So first step is the formation of three immiscible chemical phases. Now liquid manufacturing vehicle phase, then core material phase and coating material phase. ये तीन phase बनते हैं. ओके, फर्स्ट स्टेप में लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग फेज, व्हीकल फेज. अभी इसमें क्या होता है कि आपका पॉलीमर आपने डिसोल्व किया एक व्हीकल में या फिर एक सॉल्वेंट में, उसको बोलते हैं वो जो सॉल्वेंट है उसको बोलते हैं लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल फेज. दूसरा क्या होता है आपका कोर मटेरियल एंड तीसरा क्या होता है आपका कोटिंग मटेरियल. कोर मटेरियल, कोटिंग मटेरियल एंड लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल फेज. ओके, सो इन दिस स्टेज दिस थ्री गेट सेपरेटेड. कैसे होता है, मतलब आपको क्या करना है कि आपका पॉलीमर आपको डिसॉल्व करना है सॉल्वेंट में और बाद में उसका कोटिंग करने के लिए. तो आपके पास अभी दो हो गए, दो मिक्सचर हो गए, एक तो पॉलीमर इन सॉल्यूशन और आपका कोटिंग मटेरियल मतलब कोर मटेरियल. तो ये हो गया दो, अभी ये मिक्स करना है उसको, ठीक है. So core material, you have to disperse the core material into solution
of coating containing polymer. जो आपने solution polymer का बनाया उसमें core material डाल दो. Now the solvent used for polymer solution to make the solution of polymer, whatever solvent was used, so that solvent is known as a liquid manufacturing vehicle phase. Okay. Now the coating material phase. Coating material phase, immiscible polymer in the liquid state is formed by, अभी जो मिक्स हो चुका है ऑलरेडी सॉल्यूशन, अभी उसमें क्या करना है आपको कि जो मिक्स हो चुका है पॉलीमर उसको मतलब उसमें उसको ये करना है, रिक्रिस्टलाइज करना है उसमें, या फिर आपने उसका जो मिक्स हो गया है, जो डिजल हो गया है उसको लेस सोल्यूबल बनाना है. तो कैसे बना सकते हो आप? सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स. सो यू कैन चेंज द टेम्परेचर बाय, ओके. So the coating material phase, immiscible polymer in the liquid state is formed by one of the following method. Okay, following method of phase separation. So first one is like change in the temperature. अगर आप आपने देखा है कि कोई मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी बढ़ता है, और कोई उसी का टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो वो सोल्यूबल नहीं रहते उसमें. Likewise that. So by changing the temperature, then temperature of polymer solution, then adding a non-solvent, or by mixing it with the incompatible polymer, or inducing the polymer interaction, so you can regenerate that polymer from solution. And now your solution has three. So your liquid vehicle as well as your polymer is different, your liquid the liquid vehicle is different, and your solid is different, like this. So you can see in the first diagram, this is your solid core. Okay, now it is solid core, and this is your white, this is your polymer. That blue dot is a blue small dot is a polymer. Okay, and rest of the thing is vehicle. So you have three phase. So first step is nothing but the formation of three immiscible chemical phases. Okay, now second step, डिपोजिशन ऑफ कोटिंग ऑन कोर. ये जो कोटिंग का, ये जो पॉलीमर का है, ये पॉलीमर उसके ऊपर डिपॉजिट करना है सेकंड स्टेप में. ये कैसे होता है? सो इन दिस स्टेप द लिक्विड पॉलीमर कोटिंग इज डिपॉजिटेड ऑन द कोर मटेरियल बाय controlled physical mixing, or by controlled physical agitation of the coating material and core material in the manufacturing vehicle. मतलब इसको थोड़ा सा कंट्रोल स्टरिंग करना है. इसको कंट्रोल स्टरिंग करेंगे इसको, तो क्या होगा कि ये जो डॉट डॉट जो है पॉलीमर का जो मॉलिक्यूल्स है, पॉलीमर का मॉलिक्यूल्स कहाँ पे डिपोजिट होगा? उसके सरफेस पे. जो कोर मटेरियल उसके सरफेस पे डिपोजिट होगा. आप इस डायग्राम में देखो कि आपका यहाँ पे कोर मटेरियल थोड़ा सा जो सरफेस है कोर मटेरियल का, वहाँ पे क्या हो गया? पॉलीमर का डिपोजिशन हो गया. सो इट इज अ डिपोजिशन ऑफ कोटिंग ऑन द कोर, मतलब डिपोजिशन ऑफ polymer which is being used for coating, that should be deposited on the core material. Now in the third step is known as a rigidization of coating. Rigidization or fixation of your coating. कि आपका यहाँ पे हो गया डिपोजिशन, मतलब ये यहाँ पे क्या होता है? डिपोजिशन हो गया, मतलब ये ऐसा नहीं कि फिर से डिटैच हो गया, अटैच हो गया, पर डिटैच नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी रिवर्सिबल. सो फॉर दैट यू हैव टू फिक्स दैट, or rigid, you have to make rigid, you have to make that layer of polymer on coat rigid. Okay, so by using thermal cross linking or dissolution technique to perform the to form the self sustaining microcapsule. ठीक है, so these are the three process for my coagulation phase separation method for microencapsulation. Actually if you want to read much on this you can read from book, but I think there is no ये मैंने पूरा ये मेथड मैंने पूरा डिटेल में लिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में. बुक में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है, क्योंकि एक्चुअली दीज टेक्निक्स आर वेरी न्यू, सो दैट्स व्हाई. नाउ नेक्स्ट, okay, so examples of drugs encapsulated by coagulation phase separation method. Okay, so here there is one table known as a coagulation phase separation method. कौन से मेथड एम्प्लॉयड किए है उसके लिए, उसका लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल कौन सा है, कोटिंग मटेरियल कौन सा है, और कोर क्या है. मतलब आपको मैं बोलता हूँ. सो फर्स्ट एग्जांपल इज योर पैरासिटामोल. सो पैरासिटामोल इज अ कोर मॉलिक्यूल. सो पैरासिटामोल इज अ core molecule. It is encapsulated with the ethyl cellulose. Paracetamol is encapsulated with the ethyl cellulose. Okay, and the solution of ethyl cellulose is made in cyclohexane. Okay, क्या ethyl cellulose का solution बनाना है cyclohexane में, वो डिपॉजिट करना है उसके ऊपर, किसके ऊपर? पैरासिटामोल के, और बाद में ये सॉल्वेंट रिमूव करना है. ओके, सो दिस कैन बी डन बाय phase separation coagulation method.
and in that method you have to temperature change. Okay, coagulation phase separation method, temperature change from high temperature to you have to go up to low temperature. मतलब पहले क्या किया आपने, इथाइल सेलुलोज लिया, उसको साइक्लोहेक्सेन में डिसॉल्व किया, बाद में उसमें पैरासिटामोल डिस्पर्स किया, और बाद में क्या किया, टेम्परेचर चेंज किया. ठीक है, हाई टेम्परेचर टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया हाई और उससे कम आया, तो साइक्लोहेक्सेन तो वोलेटाइल है, वो तो निकल जाएगा, तो इथाइल सेलुलोज का आप डिपोजिट होगा पैरासिटामोल के. So it is how coagulation phase separation. Then second example is methylene blue. So methylene blue is coated with ethyl cellulose or encapsulated with ethyl cellulose using toluene as a solvent by addition of incompatible polymer. Okay. Then next, methyl scopolamine hydrobromide. Scopolamine hydrobromide is also encapsulated using cellulose acetate butyrate, and solvent used is ethyl methyl ketone, and it is by non-solvent addition. It is deposited by addition of non-solvent. The next one is oil soluble vitamins. They are encapsulated in by pig pig skin gelatin. Pig skin gelatin का encapsulation करेंगे vitamins के ऊपर. Okay. Liquid manufacturing phase क्या रहेगा, उसमें water रहेगा, और and addition of salt will cause deposition of gelatin on fat soluble vitamins. Then again in the same way, methyl salicylate also encapsulated by gelatin gum or Arabic gum complex. Gelatin gum and Arabic gum complex. So it is, these gums are deposited on the methyl salicylate using water as a liquid manufacturing phase, and it is done by mechanism known as a polymer interaction. Okay, मतलब ये हो गया, not much important. Now next method is a micro orifice or centrifugal process. So it is all, this method was developed by Southeast Research Institute. Okay, and this, in this method centrifugal force is utilized. Okay, remember centrifugal force is utilized in this method to hurl the core material particle through enveloping microencapsulation membrane, and it is a mechanical method of microencapsulation. नहीं समझ में आया मैं बोलता हूँ, डोंट वरी. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि माइक्रो ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस में कि कोर मटेरियल एक साइड से आता है और आपका पॉलीमर सॉल्यूशन एक साइड से आता है. तो पहले पॉलीमर सॉल्यूशन का एक मेम्ब्रेन बनता है. ठीक है, मेम्ब्रेन बनता है, और वो मेम्ब्रेन बनने के बाद वो जो कोर मटेरियल है वो उसमें डिपॉजिट करते हैं और क्लोज करते हैं. तो दैट इज द मेथड. It is known as a micro-orifice centrifugal process. Just remember, this uses a centrifugal force. Okay, and this is a mechanical method. इतना याद रखा तो भी चलेगा, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, मतलब एक आधा क्वेश्चन आ सकता है आपको माइक्रो एनकैप्सुलेशन के ऊपर, एक या दो क्वेश्चन. Now, pan coating is another method. So in this coating, it is just like a टैबलेट कोटिंग. जैसे टैबलेट को कोट करते हो आप, कि कोटिंग पेन होता है आपका, उसमें आप टैबलेट रखते हो बहुत सारा, जितना कोटिंग करना है, उसके बाद में आपका कोटिंग सॉल्यूशन तैयार करते हो और स्प्रे करते हो उसके ऊपर. साइमल्टेनियसली पैन क्या होता है, रोटेट करता है. सो रोटेटिंग पैन along with tablet is sprayed with the coating solution. That is a tablet coating. Same phenomenon is working here also. So pan coating, core particles greater than 600 microns are generally coated by this method. Coating solution is sprayed on the solid core material to get a desired size coating in the coating pan, like a tablet coating. Next one is spray drying and spray congealing. So these two methods are similar, and the core material is dispersed. Are you getting any background noise over here? आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइज वगैरह आ रहा है क्या? हेलो 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 हेलो, बैकग्राउंड नॉइज वगैरह आ रहा है क्या कुछ आपको? नहीं ना, ठीक है, ओके, चलो. आर यू गेटिंग और नॉट?
Okay, few points of this present today's slide are not in is not present in the books, but still I have made today. इसमें का बहुत सारा कंटेंट जो है आज जो प्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें का मैंने बनाया है अभी. Okay, so we have seen this pan coating and microencapsulation. So next one is spray drying and spray congealing. Just remember the methods. Pan coating ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. One of the following is not a method for microencapsulation. आपको डायरेक्टली ऑप्शन में ही आएगा. या फिर one of the following method is used for coating for micro capsules as well as tablet. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. That is a pan coating. तो ऐसा ठीक है. या फिर अक्सर साइज ये भी एक चार्ट बोला था वो चार्ट भी आ सकता है. So spray drying and spray congealing. So these two methods are similar and the core material is dispersed in the liquid coating substance and spraying or introducing the core coating mixture into same environment condition whereby relatively rapid solidification of the coating is affected. मैं बोलता हूँ इसमें क्या होता है. Actually these are two process, spray drying and spray congealing. ठीक है, spray drying and spray congealing. इसमें क्या होता है कि जो कोर मटेरियल है वो पहले आपको लिक्विड में डिस्पर्स करना है. जो कोटिंग सॉल्यूशन है आपका पॉलीमर का कोटिंग सॉल्यूशन उसमें डिस्पर्स करना है. ओके, और बाद में उसका रैपिड सॉलिडिफिकेशन करना है. मतलब जो भी सॉल्वेंट होगा वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, वो अपरेट हो जाएगा. ठीक है, एक तो वो हो गया, उसको बोलते हैं स्प्रे कंजेलिंग. और या फिर स्प्रे आपका जो कोटिंग सॉल्यूशन है वो आप स्प्रे कर सकते हो है ना, तो उसको बोलते हैं स्प्रे ड्राइंग. Spray drying and spray congealing. So actually basic difference in the both two methods are the formation of coating. So difference is between the formation of coating. It is done by rapid evaporation in case of spray drying. Spray drying में क्या होता है आपको मालूम है. स्प्रे ड्राइंग में हॉट स्प्रे ड्रायर देखा है आपने कि हॉट एयर आता है, ठीक है, और वहां से उसका एकदम मॉइस्चर निकल जाता है. तो इसमें क्या करना है आपको, सेम स्प्रे ड्रायर यूज करना है. उसके लिए स्प्रे ड्रायर यूज करना है माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए कि आपको फर्स्ट आपका कोर और जो कोटिंग सॉल्यूशन है वो डिजोल्व करना है और स्प्रे ड्राइंग करना है उसका. हो गया आपका स्प्रे ड्राइंग. स्प्रे कंजेलिंग में क्या होता है. सो बेसिक डिफरेंस इन द बोथ मेथड इज द फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग. इट इज डन बाय रैपिड इवापोरेशन इन केस ऑफ स्प्रे ड्राइंग एंड थर्मल कंजेलिंग और thermal congealing of a molten coating material or solidifying a dissolved coating material and introducing a coating core material into non-solvent spray is nothing but the spray congealing. से स्प्रे ड्राइंग में क्या होता है आपने देखा. स्प्रे कंजेलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि कोटिंग कैसे होता है कि थर्मली कोटिंग इज डन बाय थर्मली कंजेलिंग द मोल्टन कोटिंग मटेरियल. मतलब जो कोटिंग मटेरियल है आपका वो मेल्ट करते हैं और उसको थर्मली उसका ये करते हैं, डिपोजिशन करते हैं उसके ऊपर. सो उसको बोलते हैं थर्मल कंजेलिंग. एंड डजंट इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर दिस यू कैन स्किप. ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ मेथड से याद रखो, बाकी कुछ नहीं. नेक्स्ट मेथड इज सॉल्वेंट इवापोरेशन. एज द नेम इंडिकेट सॉल्वेंट इवापोरेशन मतलब क्या. Okay, so coating solution is dissolved in the volatile solvent in which is immiscible with liquid manufacturing vehicle. The core material is dissolved in the coating polymer solution with the continuous stirring. The core material mixture, okay, यहाँ तक ये part होता है. Coating solution is dissolved in the volatile solvent. ठीक है, कोटिंग सॉल्यूशन जो भी है आपका उसको वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो. देन सॉल्वेंट इज इमिसिबल विद दैट कोटिंग सॉल्यूशन. कि मान लीजिए आपने कोटिंग सॉल्यूशन बनाया उसका वाटर में, तो उसमें क्या करो क्लोरोफॉर्म डालो, तो दैट इज इनमिसिबल. ओके, देन कोर मटेरियल इज डिसॉल्व इन द कोटिंग पॉलीमर सॉल्यूशन. उसके बाद में कोटिंग पॉलीमर सॉल्यूशन में वो कोर मटेरियल भी डाल दो उस सॉल्यूशन में. ओके, विथ आपको स्टर करना है उसको और बाद में थोड़ा सा हीट अप्लाई करके सॉल्वेंट को इवापोरेट कर देना है, तो उसका कोटिंग उसके ऊपर बन जाएगा. दैट इज नथिंग बट द solvent evaporation, microencapsulation. Okay, with continuous stirring the core material mixture is dispersed in a liquid manufacturing phase to obtain a appropriate size of capsule, microcapsule, and then mixture is heated to evaporate the solvent from the polymer. That is nothing but the solvent evaporation. Next one is a polymerization. Next one is a polymer. Actually this is a new technique and most of the this technique is very suitable for pharmaceutical product, microencapsulation of pharmaceuticals and medicals. Okay,
सो दिस रिमेंबर पॉलीमराइजेशन, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. सो पॉलीमराइजेशन इज अ रिलेटिवली न्यू टेक्निक एंड इट इज okay, new technique for microencapsule formation method. This method involves reaction of monomeric unit located at the interface existing between core material substance and continuous phase. इसमें क्या होता है कि आपने सॉल्यूशन बनाया, आपकी कोर मटेरियल और पॉलीमर का सॉल्यूशन है, उसमें कोर मटेरियल डाल दिया, तो वहाँ पे इंटरफेस बनेगा. ठीक है, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस बनेगा. तो कुछ पॉलीमर्स के मॉलिक्यूल वो इंटरफेस के ऊपर जाके बैठेंगे. ओके ओके, अभी आपको क्या करना है कि उसका पॉलीमराइजेशन करना है. वहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसका मल्टीपल पॉलीमराइजेशन करना है. तो दैट इज नथिंग बट द पॉलीमराइजेशन टेक्निक. ओके, new technique for microcapsule formation. The method involves reaction of monomeric unit located at interface existing between core material substance and continuous phase. है ना, आपको जो सॉल्यूशन बनाया आपने पॉलीमर का, वो हो गया आपका एक कंटिन्यूस फेज. उसमें क्या करना है आपने, कोर मटेरियल जो भी जिसका भी कोटिंग करना है वो डालना है. उसके बाद में क्या होगा, वहाँ पे टू फेज सिस्टम बनेगा. कोर अलग होगा आपका और कंटिन्यूस फेज. तो उसके जो इंटरफेस है दोनों के बीच में का, वहाँ पे कुछ पॉलीमर मॉलिक्यूल वहाँ के जाके बैठेंगे. है ना, तो पॉलीमर मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन करना है आपको. दैट इज नथिंग बट पॉलीमराइजेशन. एंड दिस मोस्ट एप्लीकेबल मेथड फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल. नाउ मेथड्स अगेन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. अगेन एक बार ये बुक में दिया है मैंने. ओके, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है. सो एयर सस्पेंशन मेथड, it was invented by Daly Brewster and involves the dispersing of solid particle core material into supporting air stream and spray coating is air suspension. इसमें क्या होता है कि मैं दिखाता हूँ डायग्राम में आपको. ठीक है, जस्ट रिमेंबर डेली ब्रस्टर इज एसोसिएटेड विद द एयर. इसके बारे में नाइपर में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है. डेली ब्रस्टर और ब्रस्टर टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज एयर सस्पेंशन मेथड. ओके, इसमें क्या होता है कि मान लीजिएगा आपके पास परफोरेटेड चेम्बर है, उसमें आपको पाउडर रखना है और बॉटम से आपको एयर यहाँ पे पास करना है. एयर जब पास करेंगे आप, तो दैट पाउडर पार्टिकल्स विल बी suspended in the air. Okay, that powder particle will be dispersed in the air. Okay, and now you just have to spray the solution over there to get a coating solution spray करना. Okay, that is nothing but the air suspension. Now raster flow is involved in this air suspension. इसके ऊपर भी एक और क्वेश्चन आया था. Now applicable for both micro and macro encapsulation. Now coagulant phase separation के बारे में मैंने पूरा बोला है, उतना ही स्टेप बोला है. माइक्रो और फिश ये भी बोला है, इसके बारे में बोला है. ठीक है, पेन कोटिंग, स्प्रे डाइंग, स्पिंकलिंग, सॉलिड ऑपरेशन, वही चीज है सब कुछ. नो now just try to focus on this diagram. So this is a method for air suspension. So air suspension method for micro encapsulation. Now what happens, यहाँ पे आपका पाउडर बेड है और बॉटम से आपका एयर आ रहा है. तो एयर जब बॉटम से आएगा तो ये जो पार्टिकल्स है आपके पाउडर के, वो सस्पेंड हो गए. ठीक है, सस्पेंड हो गए या फिर आपका एयर में आ जाएंगे. तब आपको यहाँ से स्प्रेइंग सोल्यूशन स्प्रे करना है, कोटिंग सोल्यूशन. और कोटिंग सोल्यूशन जब भी मतलब ये देखो आप, नोजल है, नोजल फॉर कोटिंग, यहाँ से स्प्रे हुआ एयर के साथ. ठीक है, ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन द कोटिंग चैम्बर, ये मूवमेंट है. एक बार यहाँ से पार्टिकल वहाँ पे जाएगा, फिर से आएगा. तो ईच टर्न particle is being coated with a new increment of coating solution. Okay, so this is how air suspension method works. Now this is known as a Wurster technique. Now this air suspension method has a three different variation. It is known as bottom spray. It is okay, bottom spray, tangential play, and it is known as a tangential spray. It is known as a bottom spray, and it is known as a circular spray. So there are three variants. I think इसके बारे में मैंने बुक में दिया है, और इसका एक अनदर नेम है टेंजेंशियल स्प्रे का, उसका भी दिया है बुक में. नाउ ये आपको फेज सेपरेशन को एजोलेशन ये आपको बोला है. ओके,
Just I will save the recording once and then we will continue again. Are you getting or not?